Sir, I rise to support the bill under the nomenclature the weapons of mass destruction and their delivery systems, Prohibition of Unlawful Activities Amendment Bill 2022, as it is intending to amend the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems, Prohibition of Unlawful Activities Act 2005. So without any reservation or without having any qualm, all of us are extending our support to this bill. Since last day, the House has been reverberating and ruminating with the mission, visions, and the thought and the philosophy of our predecessors such as Jawaharlal Nehru ji, Indira ji, Rajiv ji, Atal Bihari Vajpayee ji. Yes, we have inherited a great country, so it is bound in duty entrusted upon us to defend and protect the country. In the year 1988, 9 June, at the special session on nuclear disarmament at United Nations, Rajiv Gandhi presented a time-bound action plan for nuclear weapon-free world. So, it was enunciated by our country long back. What should be done, what needs to be done for the people across the world to stem the rot arising out of the nuclear proliferation. Here, we are all talking about Hiroshima, Nagasaki, catastrophic destruction. But it is alarming to note that still the world possesses more than 13,400 nuclear weapons. There have been over 2,000 nuclear tests conducted to date. So disarmament is the best protection against such dangers. It has first conceived and enunciated by our country. Jawaharlal Nehru conceived Atomic Commission, 1974 Project Buddha, 1998 Project Shanti. We have at least made ourselves as a force to be reckoned with. So now the question is that we are trying to resist the threat of weapons of mass destruction by adopting some measures that has been depicted here in this bill. मैं एक बात पूछना चाहते हैं जयशंकर जी से कि जब हिंदुस्तान से एक नहीं, एक के बाद एक भारी तादाद के सारे लोग हिंदुस्तान की सारे बैंकों को लूटकर देश से भाग रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। कैरिबियन सी के बगल में, कैरिबियन सी के किनारे में बैठते हुए वो लोग मस्ती मार रहे हैं और हम यहाँ फेसबुक में, व्हाट्सएप में उनको देख रहे हैं। तो जरा हिंदुस्तान को लूटते हुए, हमारे देश को सारे धन को लूटते हुए, हमारे देश छोड़ के जो आराम से बाहर घूमते हैं, उन लोगों को खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ बिल में आप बोलते हैं कि किसी व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति अगर इसमें शामिल होगा तो उसका संपत्ति जब्त करने की आपको एक कानून चाहिए। कानून लीजिए ना, कानून तो हम देना चाहते हैं। अगर मैं लार्जर पर्सपेक्टिव में दो चार बात जरूर कहना चाहते हैं। जयशंकर जी, what is the unequivocal definition of weapons of mass destruction? Please, let him complete. I do not have any idea. Unequivocal definition of weapons of mass destruction. I think
it depends upon the creativity of the enemy. Before 9/11 in America, when Twin Tower was demolished, have we at that time imagined that a aircraft could be turned into a flying missile? So it depends upon the creativity of the enemy. So we have to prepare ourselves for any eventuality that should be done right at this situation. Because rogue states are there. A.K. Khan laboratories, I think, still existed somewhere in the world. So how India will be dealing with this kind of unforeseen situation? Here you are talking about person. A person cannot do anything on its own capacity. On the one hand, we are talking about state-sponsored terrorism, that by implication indicates that some states must be behind the terrorist activity. So we know, even knowing everything, our hands are tied. We ought to plead in the international fora. Besides that, we can do nothing more. Even I would suggest the Honorable Minister and the Government of India that till date, from 1925 to 2017, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 international treaties on weapons of mass destruction have been signed. Geneva Protocol, Partial Nuclear Test Ban Treaty, Outer Space Treaty, Non-Proliferation Treaty, Seabed Arms Control Treaty, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, Biological Toxin Weapons Convention, Chemical Weapons Convention, Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons. सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है न्यूक्लियर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी अब तक ये नॉट इन फोर्स में है. 2021 साल हो गया, अब तक एंट्री इनटू फोर्स का जो डेट, वो डेट अभी तक नहीं पहुंचाया. मतलब ये जो सबसे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट बैन ट्रीटी ये होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ. ये केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन क्या होता है? ये पुअर मैन्स एटम बॉम्ब, जो कन्वेंशनल एसिमेट्री को ऑफसेट करने के लिए स्मॉलर कंट्रीज को इस्तेमाल कर सकते हैं. ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे हम देखा कि इराक को डिस्ट्रॉय कर दिया गया. वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ये आज के नहीं, बहुत पुराने जमाने से ये बात आ रहे हैं. ये केमिकल वेपन, ये बायोलॉजिकल वेपन, ये आज की तारीख के नहीं, लेकिन हमारे पास ये सबसे जूझने के लिए फायरवॉल क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी मैकेनिज्म क्या है, हमारे पास उतना इंटेलिजेंस है या नहीं? क्योंकि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत होते हैं. वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अमेरिका पे हमला होने के बाद सारे दुनिया सचेत हुए थे, उसके बाद हम भी सचेत होने लगे, लेकिन हमारे साधन है क्या? सिर्फ कानून पारित करने से इससे हम मुकाबला नहीं कर सकते. और सारा आप मेजरमेंट लीजिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए जो कदम उठाओगे बिना हिचकिचाहट हम उनको समर्थन देते रहेंगे. चाहे आपको नेहरू जी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इंदिरा जी को अच्छा लगे या बुरा लगे, राजीव गांधी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन देश हम सबका है. हम देश की निर्माता में सबसे आगे रहे थे, आगे है, आगे रहूंगा. नमस्कार. Thank you. Honorable Minister Jayashankar.